भारत माता की जय, हर हर महादेव। भारत माता की जय, हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युंजयमामृतम्। ओम नमः शिवाय। जनता की बात जनता के साथ में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे बीच जो पर्सनालिटी आ रही है उनसे आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। आज हमारे बीच आ रही हैं रिस्पेक्टेड मीना दास नारायण मैम के बारे में मैं 2-3 ही शब्दों में कहूंगी, बाकी रूपल जी बताएंगी। वो एक जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसर रह चुकी हैं, इंटरनेशनल जर्नलिज्म में भी काम कर चुकी हैं और साथ ही साथ शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटर। रूपल जी। पेंटर और ये सब बात तो सही है। मीना जी के बारे में अगर वो होती तो मुझे अभी ज्वाइन कर लेती तो मुझे अच्छा लगता। मैं चाहती थी कि एक छोटी सी स्टोरी, मतलब स्टोरी जैसा है वो मैं उनके लिए बोलूं, तो वो जब आएंगी तो मैं शायद उनको ये कर सकूं, उनको सम्मान से उनको बता सकूं। एक पहले हम ये बताएं कि आज हमारे मंच पे हम 3 प्रतिष्ठित नारियां हैं। जैसे मीना जी हैं, मीना जी की तो बात ही अलग है, उनके बारे में तो हम बताएंगे। ऋचा जी हैं, मैं हूँ। हमने हर हर जगह पे हर उसमें एक ऐसा लक्ष्य प्राप्त किया है, ऐसी चीजें प्राप्त की है। जैसे ऋचा जी हैं, ऋचा जी ह्यूमन राइट्स में एक ऐसे पद पे हैं जहाँ पे अब कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ऋचा जी को पटना में तुरंत फोन आ जाते हैं। और ह्यूमन राइट्स में रहने के बावजूद ऋचा जी इतना काम कर रही हैं। अपना काम करने के बाद भी ह्यूमन राइट्स के कोई भी किस्से, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, किसी पे कोई भी अत्याचार हो रहे हैं, ऋचा जी उसको स्वयं देखती हैं और ऋचा जी वहां के सारे मामलों को स्वयं सुलझाती हैं। ये तो हुई। सेकंड बात, हम ऐसे पदों पर बैठे हैं, आज हमें इतना गर्व है। हमने आज मीना जी भी पहले से स्टार्टिंग से हमने शुरू किया था एक निचले स्तर से, जैसे हमने सिर्फ एक प्रोटेस्ट से शुरू किया था। मीना मैम की बातें बहुत ऊपर तक पहुंचती है, हमारी बातें तो शायद ही किसी तक पहुंचती होगी। हमें नाम दिए गए काफी सारे, हमें जलील किया गया बहुत कुछ, हमें बोला गया कुछ कुछ, मीना जी को भी काफी कुछ सुनाया गया, लेकिन हम ऐसी नारियां हैं जिनको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम आ गई। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर शो। Good evening, Rupal मैम and Richa. वेलकम मैम। आपके स्वागत में मैं चाहती थी, आप आई हैं, आपके स्वागत में कुछ बोलना चाहती हूँ। ए Please. मीना जी, आपको मैं क्या कहूँ। ए मीना जी, आपको मैं क्या कहूँ। आपकी हर बात निराली है। एक ऐसा पौधा है, आप एक ऐसा पौधा है जिसमें घर में हरियाली है। आपकी शान में सिर्फ इतना कह सकते हैं, आपकी शान में सिर्फ इतना कह सकते हैं, आपकी ऊंचाइयों के सामने आसमां भी नहीं रह सकता है। मेरा सिर्फ इतना सा एक पैगाम है, मेरा सिर्फ इतना सा एक पैगाम है। ए मीना जी, आपको सर झुकाकर मेरा ये सलाम है। ए मीना जी, आपको सर झुकाकर मेरा ये सलाम है। Thank you, Rupal. But I don't think I deserve so much. Somewhere in the middle is okay. डिजर्व तो आप बहुत कुछ करती है। Ma'am, without wasting any time, let us start not with SSR murder case. Rather, the burning topic nowadays is the opposition toolkit. Yeah. We have seen so many verticals in which the opposition is working. Whether it is currently, if we talk about Agnipath scheme, recruitment scheme,
if we talk about the reopening of SIT against Prime Minister Narendra Modi, if we talk about losing election, and again on a very grassroots level, and again blaming and putting bad words for nations and everyone. So ma'am, why those people, those who are youngsters, who are younger than our age, studying from very good institutes across nation, why are these people also indulged in such kind of activities? Because these activities were provoked through social media. Your opinion? Yeah. So, first of all, see, Rupal and Richa, there is a very big nexus behind this, and this is an external nexus. And as we know, it's a toolkit, and this toolkit has been in action ever since the Shaheen Bagh, the Delhi riots, the farmers protest. Then we have also Nupur Sharma's, what she spoke about the Quran. And all this has been not because of what anybody has done. Nobody has done anything. India is a very peaceful country, but they have to sow the seeds of discontent, hatred, and make people fight each other, because you have a very strong prime minister like Narendra Modi. And when you have a very strong prime minister like Narendra Modi, who's trying to take India, so many notches up in the as the image of a country in the world, then see, it becomes very difficult for these people to exist, because their intention is to make countries go at war. You look at the war between Russia and you look at Ukraine. इसकी जरूरत नहीं थी, मगर इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भी यही लोग हैं. आप अगर बोलेंगे कि ये सोरस के जैसे लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं ये यूक्रेन को, और उनका और उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ बिजनेस है, क्योंकि वहाँ बहुत कंपनीज है. There's a lot of Ukraine is very rich, in minerals and so many things. But if you look at the other side of Ukraine, see, they have trafficking, child trafficking, women trafficking. It is supposed to be the capital of trafficking. So there's a lot of bad things happening also. So, but that is okay. अगर देखेंगे तो ये इन लोगों को वो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट उनको सूट करते हैं. सो एज लॉन्ग एज अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बॉलीवुड की जैसे एनवायरनमेंट इन लोगों को सूट करते हैं. उसमें क्या है? ड्रग्स है, वायलेंस है, ट्रैफिकिंग है, क्या बोलते हैं कि इतना वाइट मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ है. तो जब ये होता है तो एक राज्य यूनाइटेड नहीं होता है, तो उनके हाथ में होता है. किसी को भी आके कुछ भी कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू लुक एट दिस, you call him, everybody nicknames him Zubair. So this guy is now under arrest for what? See, just if you see the video that he has been putting, where they actually kill a tailor, it shows their mindset. And then what was he? Why was he behind Nupur Sharma? What did Nupur Sharma do? She only read out what was in their hadith, in the Quran. So she did not do anything, which was extra or something from her own, figment of her imagination. मगर उसको उसमें उन्होंने क्या देखा है कि वो बहुत नुपुर शर्मा बहुत स्मार्ट है, तो उसका इंटेलिजेंस भी बहुत हाई है. तो इसको, और हिंदू है, सबसे बड़ा ये नॉच है वो कि वो हिंदू है, तो उसको अटैक करना है. और उन्होंने सोचा कि दूसरे सब राज्य उनको सपोर्ट करेंगे, मगर ये तो उल्टा हुआ. 38 countries in the world supported Nupur Sharma and said that what she said, there was nothing wrong in it. There was nothing extra. It was something from their book itself. Okay. तो जब ये सब देखने लगा कि the wind is blowing against them, तो ये टूल किट और ज्यादा एक्टिव होता है. और ये अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में भी आप देखेंगे तो दिस इज अ वेरी वेलकम स्कीम दैट इज वेलकम बाय ऑल पीपल.
ओके, इन लोगों को इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, वी डोंट नो. सी एनीथिंग गुड, सी व्हाट हैपेंड इन द फार्मर्स केस. इन द फार्मर्स केस, मोदी जी वांटेड टू रिमूव द मिडिल मैन. और ये लोग क्या बोल रहे थे कि फार्मर्स के लिए ये खराब है. बट हु आर द फार्मर्स दैट आर फाइटिंग? दे आर द रिच फार्मर्स who are getting tax-free land. Everything is tax-free for them. It is not the normal farmer. The poor farmer never, he was happy with the scheme, you know. So, जो भी अच्छे, what do you say, अच्छे, अच्छा करना चाहते थे मोदी जी, उसको सब उल्टा कर देते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पीस नहीं चाहिए. इनको सारा टाइम रायट, किलिंग, मर्डर, यही सब कुछ चाहिए. और अगर आप पूछेंगे कि राहुल गांधी क्यों इतना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अगर कोई आप ईडी किसी को समन करते हैं तो चुपचाप उसको उधर जाके आंसर करना है, वो उसका ड्यूटी है. और उसको भी उन्होंने एक दूसरा रंग दिया, like Gandhi's movement, coming walking from his house to that place. He should be ashamed. You are being questioned for your scam, biggest scam in the world. You and your mother, and you are going as though you are a freedom fighter. ये तो इन लोगों की क्या बोलते हैं कि IQ भी बहुत कम है. जो भी करते हैं वो उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि जो हुआ था अभी केरला में, राहुल गांधी के ऑफिस वो लोग वैंडलाइज किया, जला दिया, सब कुछ किया, तो उसके पीछे कौन है? तो जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन किया ना, तो कांग्रेस ही है उसके पीछे. तो इतना भी उसको अक्ल नहीं है कि थोड़ा सोचो, अगर कोई ये इन्वेस्टिगेट करेगा तो सच बाहर आ जाएगा. मगर ये लोग वो भी नहीं करते. सब कुछ, they make it so simple for us to fight them. So when you talk about the the tool, all the tools working, see, even if you look at the Yashwant Sinha, who has been propped up as a president candidate, आप सोचते हैं now Congress, ma'am, but now Congress itself is criticizing him. क्या? तो इनका एक ही उद्देश्य है, जिसको नमो से प्यार नहीं है, जो नमो से क्रिटिसाइज करते हैं 24 hours, उसको ही प्रेसिडेंट बनाना, so that is the only intention. And that also Narendra Modi torpedoed here. He brought Draupadi Murmu, and she is a very, eligible Correct. president. Yeah. So इसमें क्या होता है, Richa, see, is that people can see through, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया है. एक मिनट ना, आप अभी बोला कि कांग्रेस भी अपोज कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ मैंने नहीं पढ़ा. तो ये सी चेंजेस, न्यूज़ इज कमिंग 24 hours, so we need to keep ourselves updated. So public are not fools. So I mean, these things just don't work. Absolutely. Yes. Rupal, do you have any questions? Yes. एक शेर, एक आदमी जिसने इस पूरी कंट्री को, पूरे जितने भी लोग थे उनको हिला के रख दिया. मैं अर्नब गोस्वामी जी की बात करूंगी. एक आदमी जिसने अपना हित कभी नहीं देखा. मैं ये कहती हूँ उसने जो भी किया, लेकिन साधुओं की लिंचिंग के बारे में उसने आवाज उठाई. कांग्रेस में हो रही चीजों के बारे में उसने आवाज उठाई. सुशांत सिंह के केस के बारे में उसने आवाज उठाई. दिशा के केस के बारे में उसने आवाज उठाई. और आज MBA की जो सरकार कर रही है उसके लिए भी आवाज उठाई. उस आदमी के ऊपर हमारे जितने भी लोग हैं, जो हमने जिस मूवमेंट को शुरू किया, उनकी ही बहन उनके ऊपर ये लांछन लगाती है. अर्नब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट है, 1000 करोड़ रुपया लेके बैठ गए हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं. वो आदमी की क्या गलती है? व्हाट इज हिज? नहीं, ये किसने बोला? ये प्रियंका सिंह ने स्टेटमेंट दिया है. ये प्रियंका सिंह ने ट्वीट किया था और उस पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था. जिस आदमी ने, व्हाट डिड शी से? शी सेड अर्नब गोस्वामी इज अ जर्नलिस्ट. उसने कोई बड़ा काम नहीं किया है. उसने 1000 करोड़ तो ले लिए होंगे. दैट्स व्हाई ही इज नॉट टॉकिंग.
ये गलत बात है उसके स्टेटमेंट्स है हमारे पास। तब मैंने ट्वीट किया? ऑब्जेक्शन उठाया था, आई विल उसने ट्वीट ओनली सपोर्ट अर्नब। उसने ट्वीट किया? हाँ जी, ट्वीट किया है मैम। मैम उसने किया है, मैं अभी ढूंढ रही हूँ ट्वीट में, और मिल जाएगा मैम तो हम लोग आपको मैसेज कर देंगे। हाँ मैम, किया है उसने ट्वीट। फिर भी अगर और ट्वीट किया या इसके बारे में भी कुछ भी लिखा है तो भी वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा अर्नब का इंटरफियरेंस नहीं था इस केस में तो ये तो लाइमलाइट में कभी कभी नहीं आता। See, it is only because of Arnab's, because he is mainstream media. It is because of his, insistent, investigation and reports that people came to know about this in the world. See, we are all there. We are all YouTubers. We are spreading message, but we are not mainstream media. Mainstream media has a very big reach, and at that time, Arnab did full justice to that. तो इसमें मैं इसके साथ एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर ये अभी बोल रही है तो मैं भी एक बात उससे पूछना चाहती हूँ कि इसने कब कब डिसाइड किया कि सोशल मीडिया में आके बात करें? कितना टाइम लिया ट्विटर में आके हमसे बात करें? बहुत टाइम लिया। और जो भी टाइम लिया था ना, उसमें भी वो तो गलत लोग के साथ कनेक्ट किया। आप पूछ रहे हैं कि कौन है ये गलत लोग, तो मैं सीधा बोल रही हूँ, नीलोत्पाल और उसका नाम भी मैं, स्मिता पारेख, ये दोनों लोग एसएसआर के वेलविशर्स नहीं है। इसके बारे में सब लोग को मालूम है उनका बैकग्राउंड, और जो भी वो लोग कर रहे थे अपने अपने लिए कर रहे थे, अपनी पॉपुलैरिटी बिल्ड करना चाहते थे, समझे? तो इसमें भी वो रॉन्ग कंपनी चूज किया था। तो that's the first thing is she joined late. Second is she joined hands with two people who were not with the movement. Okay. Third thing is instead of going to Supreme Court and telling them that CBI is being delayed and they should approach the CBI, when she knows as a lawyer, she should have gone there, approached them and asked why the delay. जब भी ये हम उनको रिमाइंड करते हैं तो वो चुपचाप बैठती है। तो वो ये तीसरी गलती है इसका। हाँ, और अगर द फोर्थ गलती, इफ यू आस्क मी, इज दैट उसका काम नहीं है ये टैगलाइन लगाने को। आप क्यों टैगलाइंस लगाते? She has filed a case against us. हाँ, she has filed a case against us. हम सवाल क्यों पूछते Our हैं? name is there. अच्छा, अलका प्रिया, अंकुर, एकता, रिचा, रूपल and others. अच्छा, क्योंकि आप लोग ने क्वेश्चंस पूछे। Yes, because we asked a simple question but in a harsh way, that why you put 306 in spite of 302, because you are family. Yeah. Ma'am, if something mishappens in my house and I found someone suspected in that absurd cause, I must file equivalent to that, related to that, right? The complaint. But why did she or they filed 306? This was our question. And our next question was, like, what kind of self-musing are you posting on social media in the name of Sushant? Sitting at the beach in small apparels, right? And you are doing self-musing. So these were our questions. Okay, fine, that the way we spoke was pretty harsh, but we all have different kind of way to put our expressions, right? So first Shweta Singh Kirti came up with all the glittering stuffs on her social media platform, and she also posted one post that mentioned she was a sportsman in school days. And she showed a piece of newspaper article that I participated in such and such things. I mentioned only one line, ma'am, that Manoj sir still remembers you. He is our PT teacher, because I'm also from the same school.
Okay. And she said, how do you know him? I said, I am alumni. And then she blocked me. So these are some questions. Are, so ma'am, if we are not as rich as you, if we are not living in US, you will block me. When we started exposing such things, and we शायद started, आपने, हाँ, आपने right, कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछा होगा तो इसलिए। हाँ नहीं मैम, हमने एक्सपोज किया है इनके हाँ, प्रोटेस्ट के नाम पे पैसों को लेके। मैम, ये लोग हमारे पैसों पास की बात नहीं कर स्क्रीनशॉट रहे। है। अच्छा। मैम शिल्पा समय, शी वाज जैसे आस्किंग ही मनी हमने फ्रॉम शिल्पा पीपल। समय का नाम हाँ, लिया मैम, जैसे हाँ, ही शिल्पा समय का नाम हमने लिया, इसने अगले दिन हमारे ऊपर केस कर दिया। मैम हमने कभी झूठ नहीं बोला और हमने हाँ, हमेशा सच का साथ दिया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। परेशान वही लोग होते हैं जो हाँ, गलत होते हैं। जैसे महाविकास आघाड़ी के परेशान है। आज इनके अंडर में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हमने जितने जितने लोगों को एक्सपोज किया है, सब परेशान है। क्योंकि इन्हीं के लोगों ने हमें आके सारे सबूत दिए, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुए इन प्रोटेस्ट, उनसे पैसे लिए अच्छा, गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके स्क्रीनशॉट्स आए, वो सारे हमने जनता में रिवील कर दिए। अच्छा, हाँ, अब ये डरे, ये बिल्कुल डरे, क्योंकि ये मूवमेंट मैम सिलेक्टिव है, था और हमेशा रहेगा, क्योंकि इनकी फैमिली ने सिलेक्टिव चीजें की है। ये अच्छा, बहुत गलत बात है। आप भी जानती हैं दिल में मैम, पहले से आप हैं इस मूवमेंट में, हाँ, हाँ, यू नो बेटर देन मी। या, इन्होंने सब अच्छे अच्छे लोगों को इग्नोर करके उनको हटाया है, उनको पूरी तरीके से उनके कैरेक्टर को खत्म किया है। वो जानते भी नहीं कि वो इंसान कौन है। वो आज भी अगर बोलते हैं ना कि मीना जी के, हमने बोला कौन है मीना जी, आप जानते हो? आप बोल कैसे रहे हो उनके बारे में? उसने क्या बोला? मैम बहुत सारी बातें बोली हैं, आपको पता अच्छा, नहीं है। तो हम वो लड़ते हैं लोगों के सब कुछ लिए। ट्विटर ट्विटर पे तो नहीं आया? मैम ट्विटर पे नहीं होती, इनकी स्पेशल मीटिंग होती है। इनकी अच्छा, जूम पे, आपको ये भी बता दूं, इनकी जूम कॉलिंग मीटिंग्स होती हैं और वहां अच्छा, पे अच्छा, चर्चाएं होती हैं। दीदी देखो ये किया, दीदी देखो ये किया, दीदी ये, और दीदियां इनकी चर्चाओं में भाग लेती हैं। अच्छा, सुशांत का केस छोड़ के सारी बातों पे चर्चा होती है मैम, लेकिन ये सब चीजें हमने रखी हैं, हमने सब पब्लिक में की है। ये आप भी बहुत भली भांति जानती है मैम, आप डे 1 से जुड़ी हैं। आप दिल से बताइए कि इनकी बहनों ने पक्षपात किया है कि नहीं किया है? No, बहुत I have बुरा said, पक्षपात किया। Rupal, from the beginning, I've said there is something definitely wrong, in the way they have approached their brother's case. Okay. And see, they only joined the bandwagon when they felt they were secure. Before that itself, public ने सब लोग ये केस उठा के उसके बारे में बात कर रहे थे। इन लोगों ने शायद 1 साल पहले होगा ज्वाइन किया, और मैंने जैसे बोला, वो लोग तो गलत लोग के साथ ज्वाइन किया। और क्या हुआ? ये लोग आते हैं, फिर इसका तो कंप्लीट डिसेक्शन होता है। जब भी वो एक चैनल में जाते हैं, तो एज़ पब्लिक सब लोग उसके चेहरे देखते हैं, उसका इमोशंस देखते हैं, और जब उनके फेस में इमोशंस नहीं है, तो पब्लिक को बहुत खराब लगता है, क्योंकि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रूटल डेथ ऑफ अ पर्सन लाइक एस, एंड स्पेशली फॉर देम एज अ ब्रदर। तो जब ये इमोशंस नहीं दिखाई देता है, तो लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप लोग ये केस फॉलो अप नहीं करते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी कुछ गलत लग रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे। इसके बारे में सी, मेनी पीपल टेल मी दैट दे आर अंडर प्रेशर एंड दे आर अंडर द कबाल। इफ दे आर अंडर द कबाल, जब भी ये लोग जो डिमॉन्स्ट्रेशंस में आते हैं, तो बहुत कैजुअल लगते हैं। एक तो स्कूटर में आता है या मोटर बाइक में आता है, एक तो शिफॉन साड़ी में आके बात करता है। तो इसमें मैं नहीं बोल रही कि क्या ड्रेस पहनना है, क्या किस गाड़ी में आना है, वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मगर आपके फेस में कुछ भी दिखाई देना है, समझा? तो इतना एक ब्रूटल केस में आपको ये अर्जेंसी नहीं लग रहा है कि जल्दी होना है, जल्दी ये जस्टिस मिलना है। इसके बारे में आपको उतना चिंता नहीं है।
आपको चिंता है एक एक दिन एसएसआर इज अ डांसर, एसएसआर इज अ लवर, एसएसआर इज रोमांटिक, ऐसे ट्रेंडिंग टैगलाइंस लगाना। तो इसमें ही सबको शक होता है, समझा कि यू नो यू डोंट you stop believing in that because see that is not the mission. जब हम सब लोग ज्वाइन किया था एसएसआर की जस्टिस के लिए फाइट किया, तो हमने सब क्या किया? You yourself were in our program when we made people write letters, you know, and we gave all the letters by registered post to not only Prime Minister but also the Supreme Court judge. तो मैं ये नहीं बोल रही कि हम जो किया था वो सच है, ठीक है, नहीं, दैट इज वन स्टेप फर्दर टू जस्टिस। तो इसी तरह जो भी सीरियसली करते हैं उसका सब कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अभी आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी इज नाउ यू नो इन द डोलड्रम्स। अभी तो विद इन फ्यू डेज इट विल बी गॉन। नाउ अगर अब तो फिर से पब्लिक को ये होप आ गया कि हमको जस्टिस मिलने का टाइम आ गया, क्योंकि बीजेपी अगर आएंगे तो इसके शिंदे के साथ आएंगे तो जरूर देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ यू नो दिस थिंग ऑन द केस। तो इसलिए हम लोग सब बहुत खुश हैं। तो यू नो द मूवमेंट हैज स्टार्टेड। तो अगर मैं आपसे रूपल और रिचा, what I would tell you is that see, this is the correct time. Let this government come. This is the correct time to hit hard again and tell them that see, if you want our public this thing approval, you need to go into the case, you know. And for this, the sisters need to stand strong instead of fighting amongst themselves or fighting with supporters like you. Ma'am, can you see this picture? Yes. We have Nilotpal here. Yes. It is quite a recent picture. Acha. Okay, I'll show you. This is of 13th April. All right. Varanasi. Yes, they went to Banaras and they offered puja for Sushant. Am I audible, Rupal, properly? Yes. Okay, yes. So my question is, see, ma'am, everyone has positive and negative things in him or her, and there are bad and good person also. Okay. इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ मैम कि नीलोत्पल इतना बुरा हो गया? On Sushant's birthday this year, 21st January, she came up on Ujjwal Trivedi's channel with Smita Parekh. ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि स्मिता अचानक गलत हो गई? The thing is, what we have observed, when anyone is doing something innovative, whether it is Meena, Richa, Rupal, Smita, anyone, on their own, for Sushant or for society, in the name of Sushant, these people have problem. Yes. These people are also like that Zoo beer. Okay. These people are also like that. कैसे आप कुछ अच्छा काम अपने लेवल पे कर रहे हैं? मगर इसमें ना ऋचा, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जी पहले से मुझे ये मालूम था कि ये दोनों लोग गलत है। सी फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट मी टेल द व्यूअर्स, योर व्यूअर्स, ये नीलोत्पल ना, इसको तो एसएसआर से कोई पहचान भी नहीं था। ओके, सब लोग सोच रहे थे कि उसका उस फैमिली का एक फ्रेंड है। ये सब गलत है। उसको मालूम भी नहीं था कौन था एसएसआर। अच्छा, तो जब ये सब हुआ तब उसने he put one foot in and he started walking with the family. So pictures में सब आने लगा। तो slowly उसने एक जगह बनाया अपने लिए कि वो एक क्रूसेडर है
fighting for Sushant. इसी तरह स्मिता पारेख को भी देखेंगे तो स्मिता पारेख को she was also trying to make the same image. She was earlier in charge of some literature fest, and she got she was with Sushant Singh. And see, ये फोटोज तो हम भी बना सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं कि पहले किसी को मीट किया तो हम बड़े फ्रेंड्स हैं. ये सब गलत है. इस औरत को शायद वीडियोस भी हैं, स्मिता के तो वीडियोस भी हैं सुशांत के साथ. हाँ, नहीं, मैं देखा है, क्यों इंटरव्यू सब है, मगर वो that doesn't tell you Richa that she is close to him or he is close to her. क्योंकि मैं भी बहुत फिल्म एक्ट्रेसेस और एक्टर्स और प्रोड्यूसर से भी इंटरव्यू किया है. उसमें नहीं ये नहीं होता कि मैं उसके साथ क्लोज हूँ, नहीं, वो तो हमारा काम है, समझे. तो इसमें इसलिए मैं what I'm telling you is that I do not agree with you on this, because these are two people who have tried to jeopardize the Sushant Singh movement. Now, see, earlier जब वो अर्नब के प्रोग्राम में आया था दोनों, तब हम सोच रहे थे कि ये लोग को कुछ मालूम है, कुछ कनेक्शंस है SSR के, with SSR, but it was all wrong, it was all crap. Okay, और each time she would come out with something very odd, saying that her friends saw pools of blood where Sushant was murdered. So many people have exposed her, including Saffron Tiger. Many people have exposed them. Now, do you know, even in Nilod Pal's case, there were many news reports about him being a smuggler, smuggling things from Dubai and bringing it to Mumbai. So we all know their background. So that is separate, okay? But what you say on the other side, saying that, see, when people do something good for SSR's movement, the sisters should, be with them. उसके साथ चलना चाहिए. वो correct है. That is correct. They have to be with the people who are fighting for justice for SSR. So these are two different things, Richa. Ma'am, why very Richa, एक second, a very important question. आप day one से इस moment में, why NRI YouTubers are very much supported by family? What is the problem with NRI YouTubers are going to give the justice? I mean, seriously, they know about our judiciary, they know about how High Court works, they know how Mumbai works, they know how Maharashtra work. They don't know anything. But why sisters only support NRI YouTubers? Did you ever observe this, ma'am? See, if you're talking about what's his name, Varun Kapoor. Yes, Varun Kapoor and the sister live very close to each other in America. They are known to each other. Okay, so they're all well known, in between. So that itself is a question you have answered, Rupal, because the moment Varun is, standing with these people or showing them on this, programs, that means he is also not genuine, right? So yes. There's not much to talk about that, because I don't really care about this Varun or these fake people. I got your answer. Yeah. My next question to you relates with MVA downfall, Mahavikas Agadi downfall. Is it Sadhu's mob lynching? Is it Sushant Singh Rajput? Or is it the burning of many files in Maha government? Maharashtra government offices caught fire, hospitals caught fire during COVID, if you remember, ma'am. Yeah. And there were so many files that were burnt. Yes, ma'am. Go ahead. I'll tell you very simple. See, how was Sushant killed? Sushant's spine was broken to bits. Okay. Then you look at what happened to Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray had a spinal injury. Okay. And, the Indian surgeons who worked on his spine botched up the case. So he had to call foreign doctors to do it. Okay. Then also, he had a big problem and he had to rest. During this time itself, people were saying, where is the chief minister? Who is the chief minister? Okay. Then when he came into public, he came with the support of a male nurse. He could not even walk. And this is the man who says that he roars like a lion. Who were the people involved in the killing of Sushant Singh?
Rajput. We all know who was that. We can only say meow meow. Okay, meow meow is behind it. Huh? So we are not talking about lions. We are talking about pussycats. Okay, with effeminate voices who have vested interests in Maharashtra. They are, see, these people, if you're talking about whoever, you're talking about the penguin or you're talking about the pussycat, they don't even know how to govern a state. They know only how to be a part of the nexus where they make money. Now, what happened to Arnab? What was the reason why Arnab was put in jail? And all that happened. It was because his journalist went into his farm and found something wrong there. Now, what was it that was found there? We all know because we've been all investigating. We know what exactly is happening. Now there is a lot of this thing about human trafficking, child trafficking, organ harvesting, all these things. Now, who is behind it? Now they say that they've been in power for 2.5 years. What did they do about it? They did nothing. In fact, it increased. How many people died during the tenure of Mahavikas Aghadi? I don't know. I think almost every other day, an actor died, a starlet died, a TV actress died, or a gym, people working at the gym died. So what was happening? If you do not go along with the government or the police or the Bollywood fraternity or with the underworld, then everybody will cover up your crime. Okay, if you die, for example, just take the case of Siddharth Shukla. What happened to Siddharth Shukla? They learned from Sushant's case that you have to be very careful and cover up everything, so that every evidence, so that nobody knows how Siddharth Shukla died. Siddharth Shukla did not die by heart attack. He was murdered. And what happened was, who was a policeman who was there going and doing all these things? It was Trimukhe. Who is Trimukhe? Trimukhe is the person that Riya Chakravarti used to run to every time she was questioned by NCB. Trimukhe is the man who was the right hand of Paramveer Singh. Now when you're talking about such a nexus where you run to, normally you run to the police for help. मगर महाराष्ट्र में ये होता कि अगर पुलिस के पास जाएंगे तो आप फंस गया, जेल में पहले जाएंगे. See, a girl who just said something about Pawar was there in jail for nothing. And now because of this, what is happening now, she was allowed to go. Okay. Now, what do you mean to say we cannot talk about Pawar? We cannot talk about Uddhav Thackeray? We cannot talk about Aditya Thackeray? What do you mean? It is a democracy. So please don't tell us what we can talk and we cannot talk. It is up to you what you have to take, and believe in yourself if you're strong. Now, if you look at the Mahavikas Aghadi, I would like to say, what is the Mahavikas Aghadi? It is run by 3 women. Okay, one is Sonia Gandhi, one is Pawar's daughter, and third is Uddhav's wife. Now, these people are the ones who are controlling. It is like kitchen politics, So these people will do what they want when. And then these men, they have their contacts with all the underworld and all Dawood and all that. And then people are eliminated according to what they want. Now, see, when, you're talking about what's happening now, if you're looking at Shinde and his, the rebel party, 2/3 of the MLAs, have deserted him, deserted Uddhav Thackeray, and they are now standing strong with Shinde. Yes. Now, why do people go away from you? They go away because they don't agree with your rule. Now, if I personally think, if Sanjay Raut was not there in the Uddhav Thackeray the state party, Uddhav Thackeray would have won. You should have just put Sanjay Raut in, Shinde's camp. I would relate this. I would relate this to history. Yeah. Ma'am, all those kings who have Sanjay in their court are always defeated. Way back Mahabharata, they also have Sanjay. Yeah. They got defeated. The Kauravas got defeated. Here also,
The Sena got defeated. Now, See, yes, see, yes, ma'am. one thing very important is that they are very cunning, the Mahavikas Agadi. See, what they do is they will see what is happening. According to that, they will move. Now, when they see that Eknath, when Shinde is so strong, then what they think is what to do next. Okay, bring in the jury, bring in this, bring in that, bring in that. When everything fails, Sanjay Raut will say, let them come. In the streets, we will have violence. This is the kind of policy that they have. They will tear up your offices, they will hit you, they will kill you, and all that. How safe are you in Maharashtra? Which means no Maharashtrian wants the Mahavikas Agadi anymore. Ma'am, we have a breaking news by Shivam Singh telling Rabia Khan, mother of late Bollywood actor Jia Khan, has approached Bombay High Court challenging order, special CBI court rejecting the plea for further investigation death her daughter. Thank you so much, Shivam Singh. Ma'am, Yeah, look at it's very good. this mother. It's Look very at good. this Yeah, mother. She is so courageous, so polite, so humble. She never raised questions on central government. Rather, she kept fighting against these agencies. yeah. So, So this is see, a good approach. Hats off to that sister, ma'am. Uh, जेसिका लाल, जेसिका लाल. नहीं, yeah, जेसिका लाल नहीं, मैम. वो जो पाकिस्तान में बंद था, मैम. वो पंजाबी जो पाकिस्तान में बंद था, मैम. Sarabjit Singh. सरबजीत सिंह, यस. उसकी सरबजीत सिस्टर सिंह. को देखिए, मैम. She passed away few months back, or might be it might be an year or so. But look at the dedication, how she fought for her brother. Yeah, Can't we set an example like this in SSR movement? By putting a defamation case on Meena Das Narayan, Richa Verma, and every SSR warrior, is it going to bring justice? We don't know, Sushant. I only came. You know what, ma'am? Today I saw a tweet by Sushant Singh. Sushant Singh is also a Bollywood actor. He has acted in a movie like Dum, where Vivek Oberoi का वो friend बना था. सुशांत अरे सिंह. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुशांत सिंह जी. मैंने उसकी ट्वीट देखी मैम आज, एंड आई फेल्ट सो एंग्री. He is supporting Mohammed Zubain. He is supporting those goons who are against who are anti Agniveer. He is supporting I stand with Congress. Today he tweeted, madam, I'll show you the tweet right now. yeah. So, and he was the person who was standing in Shaheen Bagh, I still remember, against CAA NRC, which has not yet come. But what made him fear? I am shocked. I really liked him, but मैंने जब उसको शाहीन बाग में देखा मैम, मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर. और मुझे लगा 14 जून को ना वही मरा है, तो मैं बहुत खुश थी. मैंने कहा चलो बला टली. लेकिन मुझे नहीं पता ये सुशांत सिंह राजपूत चला गया. हाँ रूपल, आप मैम से कुछ पूछ रहे थे. मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. इट्स बिन दिस इज 2 years और 2 साल में पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि फैमिली ने कभी भी अर्नब जी को इंटरव्यू नहीं दिया था, जबकि वो सबसे पहले करना चाहिए था रादर देन सेंडिंग पोस्टिंग द वीडियोस. एक क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन मैम, व्हाई दिस पीपल आर ऑलवेज गिविंग दिस सर्टिफिकेट, यू आर राइट एसएसआरएन, यू आर रॉन्ग एसएसआरएन. हु इज आस्किंग यू? Who are you? We have our own identity. We are never SSRian, but we have our own identity. We are Bharatiya. हम इंडियन पहले हैं, हम देशवासी पहले हैं. हमें किसी एसएसआरएन के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. हमने सुशांत के लिए किया क्योंकि वो हमारे इनर आत्मा ने हमसे करवाया. इसके लिए हमें कोई टैग नहीं चाहिए था कि तू अच्छा एसएसआरएन है, तू बुरी वाली है, तूने ये किया, तुझे ये नहीं. मतलब दे आर जस्ट पूरा आइडेंटिटी, पूरा हमारी जिंदगी छीन लेते हैं ये लोग. तुम ऐसे हो तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और तुम होते कौन हो बोलने वाले? ये शायद आपने भी फेस किया होगा. मैम आज तो आप खुल के बोल ही दो, इनको मैसेज दे ही दो. मगर
मैं एक क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहती हूँ रूपल, कि आप क्यों अपसेट होते हैं जब ये लोग ऐसे पूछते हैं? तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आपका कैरेक्टर कैसे है, आप क्या करते हैं, आप पेट्रियट है, आप कविता लिखते हैं, आप एक्ट्रेस है, तो ये सब कुछ आपको मालूम है। आपको इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए ना? हाँ, तो फिर जब कीचड़ ये लोग आपके ऊपर डालते हैं, सॉरी आई गॉट अ कॉफ, तो जब ये लोग आपके ऊपर कीचड़ डालते हैं, तो आप उसको क्यों, why do you allow it to dirty yourself? Because आप ऐसे सोचना चाहिए, कितना कीचड़ डालेंगे आपके ऊपर उतना आप साफ हो जाएंगे, क्योंकि आपको किसी तरह भी ये इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि आई नो, सी फॉर एग्जांपल these Smita Parekh and all these people have also attacked me, just like you said. Many people have attacked. People keep on attacking you on social media because that's the easiest thing to do. बट जब आपको अपना इनर स्ट्रेंथ होता है तो उसमें किसी को भी आप जगह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 100% मालूम है कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं। ओके, तो in that case, I would say, Rupal, if I'm speaking very openly to you, I'm telling you that I don't care two hoots what these people say. From the beginning, I've stood for Sushant Singh Rajput. I've written articles. We've done all what we can to fight, to get justice. So what they say doesn't matter, because our mission is straightforward, same as yours. Yes, true. Yes, ma'am. This is the tweet I wanted to show you. This is Sushant Singh, the one, the actor who supported Shaheen Bagh. अच्छा, तो क्या लिखा है? उफ, ये डर means he is asking our government, आप डर गए, stand with Zubair, free Testa. तो मैं एक बात आपसे पूछती हूँ। Yes, इसको तो ब्लू टिक नहीं है, नहीं मैम, यहाँ पे तो एक दिया है कुछ, नहीं, वो ब्लू टिक नहीं, तो शायद ये वो एक्टर नहीं होगा, शायद इसके पीछे दूसरा कोई होगा। तो आपको नहीं मालूम कि ये वही एक्टर है कि नहीं। See, you understand, there can be many people with your name, but if you have a blue tick, you know that you are the genuine one. So here in this case, you should just ignore, because we don't even know whether this man is the same. So ignore karo. Okay. I'll share this tweet. I'll share this tweet with Rupal, and she will forward it to you. Yeah. And what I'm saying is that, see, trolls are there all the time, and they will keep on writing nonsense. ऋचा, मैं सुशांत जी को मैसेज कर सकती हूँ क्योंकि वो सिंटा के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने मुझे सिंटा का कार्ड दिया था, तो मैं पूछ सकती हूँ। डोंट वरी, मेरे पास है उनका नंबर। That's it, yeah. हाँ, मैं उनसे पूछती हूँ। मैम, मेरी तरफ से तो क्वेश्चंस खत्म हो गए, हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए और बहुत अच्छे तरीके से तीनों मिक्स करके कवर हो गए। रूपल, आप मैम से और कुछ पूछना चाहते हैं? No, I'd like to tell you one more thing, before you continue. See, whatever is happening now, Richa and Rupal, I believe, okay, Sushant was a very pure soul, a very kind soul, but I strongly think it is his curse that is bringing out the downfall of Mahavikas Aghadi. Okay, he is not allowing Bollywood to succeed. Boycott Bollywood is on. Not one film has become a success. Okay, in the Mahavikas Aghadi case, they are completely shattered. Now they are being humiliated left and right. Okay, and if you look at the police, you look at Paramveer Singh and Vaze, they are in the docks. Okay, underworld, no voice is coming out now. So the whole nexus has been cursed by Sushant Singh, and they are all getting, what you say now, karma is taking, a full turn and taking, vengeance on all these people. So however much they will say ना कि ये कोविड है इसलिए ये लोग सब आईफा में जाके बोला कि ऐश्वर्या और सब कि कोविड की वजह से हम लोग ये ऐसे प्रोग्राम्स नहीं थे और हम आज तो इतना खुश हैं, सब लोग इकट्ठा आके बहुत खुश है,
Sorry, Madam Aishwarya, it is not COVID. It's this boycott Bollywood which started after Sushant Singh was murdered that has made you guys, jobless. If you want to make Right. your husband run, dance like a clown on, in Abu Dhabi stage, where your daughter also starts dancing like him, it is people are laughing at you. Do you need such unwanted attention? You know very well that Abhishek can't dance for nuts. Okay. Why are you pushing him to do all this nonsense? Because he does not have even one film in hand. And you also are sitting down without a job. Soon, what you will do is you will push your daughter into films, that thinking that she will also, get some movies. But till we get justice for Sushant, I don't think any of you are going to get any jobs or assignments of films. There is another news update. Uddhav linked to SSR death case amid Maharashtra political crisis. BJP leader says CBI failed collect evidence. Narco test on Maha CM will unveil reality behind SSR's death. Sir, this statement has been given by a Bihar BJP leader, and I have the screenshot of it because Very good. under pressure they might delete that tweet. And before your leave, ma'am, I would like to say few lines in your honor and to all the audience that how people play with each other, whether it is emotions, sentiments, anything. खेलते सब अपना खेल, इस रंगमंच की दुनिया में सब अपना खेल रचाते हैं, अपने दुख पर वो रोते हैं, औरों पर मुस्काते हैं, चोट लगे जब खुद को तो दर्द समझ वो पाते हैं, औरों की हर चोट पे देखो बातें कई कह जाते हैं, गंगा भी मैली लगती है, भाव अपना जताते हैं, टूट के जब वो गिरते हैं इस गंगा में मिल जाते हैं, Brilliant. फूल सरीखे हर कोई, फूल सरीखे मीन्स फूल जैसे, फूल सरीखे हर कोई इस धरा पर बस मुस्काते हैं, रहते संग कांटों के और खुद को खुद से बचाते हैं, करते कर्म खुद ही हैं और ईश्वर पर उंगली उठाते हैं, बार बार वो एक ही गलती जाने क्यों दोहराते हैं, जब भी होती बात कोई तो पल्लू झाड़ वो जाते हैं, अपने को निर्दोष बता दोषी औरों को ठहराते हैं, जो कोई भी परिस्थिति वो अपनी ही चाल चलते हैं, धर्म कर्म के खेल में बस खेल वो अपना खेल जाते हैं. Brilliant. Very Ma'am, nice. only last message that you want to give to SSR's sister, what she Yes. can do right now, what is the right path, Your what is the suggestion, right ma'am. thing that she Your can suggestion. do now, because we really want सुशांत की. जब भी मैं किसी से पूछती हूँ बोलते हैं सुशांत की फैमिली ना नहीं है बराबर, ऐसे ही बोलते हैं. ये स्टेटमेंट चेंज करना होगा. व्हाई दे नॉट लाइक अ निर्भया's मदर, व्हाई दे नॉट लाइक जिया खान राबिया मैम मदर, kind of Rabia ma'am, Jessica Lal's sister. They should be like that. Some suggestion, ma'am. So what Rupal and Richa, what we can say, see, we cannot ask you, for example, Rupal, I cannot tell you to behave like Richa, or Richa, to behave like Rupal. See, each of you have different characters, okay? So what you say is definitely right. What Rabia Khan or what Jessica's sister or Janvi Kukreja's mother does, they are all exemplary. You cannot find such people. They are all a few gems in a necklace. What happens is sometimes the greed for money can overcome you, and you can change completely. Then there will be also fear of the cabal as they are trying to project it. Now, my advice to these people, is that, not that I'm someone to advise them, but if you are asking me for advice, for them, the best thing, two things that they can do is they have to approach Supreme Court asking for CBI's, delay. And the second thing is the moment the new government comes in place,
if it is BJP and Shinde's government, then they have to say that immediately this case should be fast tracked, and that the public are waiting for results. So these are the two things that they need to do. Ma'am, how you like our show? Very nice. Always, I find that, see, you two are very bubbly, very full of energy, and you write beautiful poems. But my only advice to you is, because you both are very young, is that don't get affected by what people say about you. You build your character in such a way that you don't get affected. Let them do whatever they want to throw at you. Let them throw. But it is your work that will show who you are. See, now you all are writing beautiful poetry. You all are doing all this, work like activity to prove, justice for Chant and so many other things. So that will speak for you. See, your character has to be based on your own strength. Now, nobody, whether it is anybody, even your best friend, if they criticize you, you should not be upset, because you know yourself, and I also saw that, see, you had another friend earlier. I think you were called me in a program with another friend, but I don't see that friend anymore. I know there was some sort of discord between you all. Yes. But you see, that person is gone. Absolutely. You remained. So there must be some strength to you, and that is why you have remained, and other people are moving out. So with that, thank you. I have my show now at 8 o'clock. Yes, ma'am. श्योर मैम, श्योर. Thank you so much. आप लोग प्लीज कैंडिडेट मीना को फॉलो कीजिए, उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी 8 बजे फटाफट उनका शो देखने जाइए. थैंक यू. बिल्कुल, यहाँ से सीधा वहीं जाइए. Thank you, ma'am. Thank you for coming. And continue your good work. Yes. And we are with you. Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट. Good night, ma'am. तो हमारे साथ थी कैंडिडेट मीना दास नारायण. मीना दास नारायण मैम, जैसा कि हमने आपको परिचय दिया, वो एक पोएट हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, और अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति हैं. और लास्ट में जैसे मैम ने हम लोगों को बताया कि आप लोग क्या करो, आप लोग दूसरों की बातों पे ध्यान न दो, जस्ट बी योरसेल्फ. आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं. तो मैम का ये सजेशन हम जरूर आगे बढ़ाएंगे और अपने में चेंजेस लाएंगे. तो लेकिन हमें भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और आज हमें सारे जवाब भी मिले, जिन जवाबों को हम ढूंढ रहे थे. आज मीना मैम ने भी उन जवाबों को आप तक पहुंचाया. हम बोल के थक गए आप लोगों को. मैं आज अपने सारे ऑडियंस का नाम लूंगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे न्यू लोग भी जुड़े थे. तो मैं लेती हूँ, पटेल जुड़ी हुई है हमारे साथ, उर्मिल शर्मा मैम है, शरीन पाई वर्मा है हमारे साथ, कपिल कुमार शर्मा है, और सुप्रिया है हमारे साथ, हनु मारू है हमारे साथ, और प्योर सोल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मीरा कुमारन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. मीरा कुमारन है. और हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज लेके आने वाले हैं ऑलवेज हमारे शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारे साथ अनुराधा कुरूप जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ. आई थिंक रितु मैम भी आई हैं हमारे यहाँ आज. जी हाँ, रितु मैम है हमारे साथ. थैंक यू सो मच. शिवम सिंह अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच. हाँ, निशा थॉमस है हमारे यहाँ हमारे साथ. रूपा श्रीनु प्रसाद है हमारे साथ. और that's it. आपको कोई और दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं रूपल. हो सकता है मेरे स्क्रीन पे कम लोग दिख रहे हो. अच्छा, कपिल जी तो हमेशा आते हैं. विजय सिंह जी आप लेट हो गए. थैंक यू सो मच. विजय सिंह जी, सॉरी, आप लेट हो गई. थैंक यू सो मच. शरीन पाई जी हैं, हनु मारू जी, रूपा श्रीनु प्रसाद जी हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. निशा थॉमस
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हम बहुत अच्छा लगा। आप हमें हमेशा ज्वाइन कीजिए, हम सारे सवाल और जवाब यहीं पे पूरी तरीके से रखते हैं और पूरी सच्चाई के साथ रखते हैं। हमारा सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन जोर का झटका धीरे से लगता है। अनुराधा कुरूप जी है, तो वो भी है और हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत सारे जन हैं। और मैं निशा पांडे भी हमारे साथ ज्वाइन किए, लेकिन निशा जी हमारा समय समाप्त हो गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी जो मैंने एक सुशांत सिंह का ट्वीट आप लोगों को दिखाया है, प्लीज आप लोग उसके कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें। तुमको डर लगता होगा भारत में, तभी तुम गए थे शाहीन बाग के सपोर्ट में। देखिए भाई, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे आप लोग इस सुशांत सिंह को फॉलो ना करें। दम मूवी में ये विवेक ओबरॉय का फ्रेंड बना था, और लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह के साथ ये भी थे। आई थिंक ये सुखदेव थे उसमें। मैं बता ठीक है। देती हूँ, सावधान इंडिया के होस्ट रहे हैं और हम्म। सिंटा के अभी प्रेसिडेंट हैं। मैं भी उनको मैसेज करूंगी कि अगर ये ट्वीट उनका है, और अगर नहीं है तो ये ट्वीट के नाम पे, ये आपके नाम पे करते हैं। मैं बात कर लूंगी, क्योंकि पल्लवी नहीं नहीं, जोशी ये भी वहां के आई ट्रेजरर डोंट हैं। नो रूपल की वो ब्लू टिकर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे मोबाइल पे ब्लू टिक में दिख रहा था। हाँ, ये लैपटॉप में अच्छा, वो ब्लू ओके, टिक नहीं दिख रहा है। तो आपको मैंने लिंक भेज ओके। दिया व्हाट्सएप पे, तो आप चेक कर लीजिएगा। वेल, थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर कनेक्टिंग विथ अस टुनाइट, एंड जी, थैंक यू सो मच। वी टुमारो वी हैव अ, विल ट्राई आनंदिता दीदी को बुलाने का, हाँ, क्योंकि उन्होंने वो हमें बहुत, बहुत ट्रैवल कर रही है। कल भी बेचारी हमें फोन कर रही थी कि प्लीज पिकअप माय कॉल, पर हम लोग लाइव पे थे, फोन नहीं उठा पाए। तो हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। आनंदिता दी, अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो प्लीज कल आप अपनी पूरी, क्या कहते हैं, पोटली बाबा की लेके आना, पोटली दीदी की। उसमें जितने जी, वीडियोस, पोटली दीदी, फोटोग्राफ्स हैं, हम सब शेयर करेंगे। सब सब शेयर करेंगे, सबकी पोल खोल करेंगे। आपको जो बोलना है आप बोलिए, ऑल योर्स। तो बस रोना डेफिनेटली नहीं हम है, कर, हाँ, प्लीज रोइएगा मत अब प्लीज। रुलाना है। अब रोना नहीं हाँ, है, अब रुलाना है। अब ठीक हमारे है। भी आंसू सूख चुके हैं। थैंक यू सो हाँ। मच। तो हम गायत्री गायत्री मंत्र। मंत्र से, ओम ओम भूर्भुवस्सुः भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत भारत माता माता की की जय। जय। हर 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 महादेव। महादेव। तब थैंक यू मिलते